Hello everyone, today we are going to start with nerve supply of the forelimb. So what is nerve supply of forelimb? It starts with brachial plexus. Now what is brachial plexus? It is a network of nerve that supplies most of the structures of our thoracic limb, your forelimb, and with both sensory and motor innervations. So it is placed between C6, 7, C8, T1 and T2. This is the medial aspect of the shoulder and this is the thoracic wall. So it is between that. Now talking about the nerves one by one. So with the diagram you can see सबसे पहले first number you need to remember this external thoracic that arises from this C8 and the T1 C8 and T1. So this is a long thoracic nerve and it supplies to it supplies to cutaneous trunci and omobrachialis. So हम इसके साथ लिखेंगे it supplies omobrachialis and cutaneous trunci muscle. Second is thoracodorsal above it. So it supplies latissimus dorsi. Is it clear? Then above that, third one, 1, 2 and 3. Third, long thoracic supplies serratus ventralis. It supplies serratus ventralis. Fourth is nerves to pectoral. It has two parts. One is cranial pectoral, which will supply to superficial pectoral, and another one is caudal pectoral, which is another branch of the lateral thoracic. It will supply deep pectoral muscle. Okay. Then we have is suprascapular and subscapular. Suprascapular is the branch from the C6 and C7 going backwards, and it will supply supraspinatus and infraspinatus muscle. Then we have a subscapularis, where you can draw 1, 2 or 3 branches. Subscapular will supply to subscapularis muscle. Done. Then we have axillary nerve that will supply to teres major, because at the medial aspect of the shoulder this side teres major muscle is present. So teres major, and it will supply to teres major, teres minor and the deltoideus, because that starts from the acromion process and comes downward to the humerus. After nerves to teres major nerve we cannot show in the diagram. Okay, so nerve to teres major and then axillary. Then we have is ulnar. Dekho, from this part you can draw at the elbow region that goes caudal aspect of it, that पीछे को जाएगी जो ulnar होगी, that will supplies to caudal aspect of the forearm, or you can say most of the flexors. Ulnar, radial and musculocutaneous will discuss in detail. Now you can see that this is the median one, and in the region of axillary artery a musculocutaneous is making a loop with median from which axillary artery passes. So this is the musculocutaneous. From there what will pass? 3 B's will pass. B. First is brachialis. Second is coracobrachialis. Then is biceps brachii. Okay, then median, radial and ulnar we will study in detail now. So median, radial and ulnar. सबसे पहले median we have 2 branches, medial branch, lateral branch. Ulnar have also 2 branches, palmar branch, dorsal branch. Radial have 2 branches, superficial branch and deep branch. Let me rotate the camera like this only. So देखो, जो medial है और lateral है, इन दोनों की भी आगे divisions होंगी. That is abaxial, axial,
अबैक्सियल। पाल्मर की आगे होती हैं डीप, सुपरफिशियल। तो होगा क्या, देखो ये पीछे के पास से होती हैं, पीछे के साइड पे, सॉरी पोस्टीरियर। कौन सा साइड है, मीडियल, मीडियल है। अबैक्सियल भी है, इसका नाम हो गया पोस्टीरियर मीडियल अबैक्सियल डिजिटल नर्व। ये दोनों मिलके बनाती हैं पोस्टीरियर एक्सियल। अब देखो मीडियल लेटरल दोनों है ना, हम दो लिख नहीं सकते, तो छोड़ दिया हमने। पोस्टीरियर एक्सियल तो है ही है, डिजिटल नर्व। ये अब एक्सियल और ये डीप, ये दोनों मिलके बनाती हैं पोस्टीरियर लेटरल अबैक्सियल डिजिटल नर्व। ये सुपरफिशियल क्या बनाएगी, इसके बिल्कुल उल्टा, पोस्टीरियर का उल्टा एंटीरियर, ठीक है, मीडियन का उल्टा लेटरल, या इसका देख लो अबैक्सियल, अबैक्सियल यस, देन डिजिटल नर्व। सिर्फ यहाँ पे पोस्टीरियर और एंटीरियर वर्ड का फर्क आता है। जो डोर्सल है दैट कंटिन्यूज एज डोर्सल कॉमन डिजिटल नर्व, and superficial also continues as dorsal common digital, and then they divide into two parts, abaxial and axial, ठीक है। then the abaxial one continues as abaxial proper, common से बात प्रॉपर ही आती है, abaxial proper digital nerve, and axial will continue as axial proper digital nerve. The deep one will supply to craniolateral aspect of the antebrachium, and it continues as anterior abaxial proper digital nerve, ठीक है। तो ये हो जाएगी anterior axial proper डिजिटल नर्व। आप इन दोनों के आगे भी एंटीरियर लगा लें। तो देखो हमारे पास ऐसे तीन पोस्टीरियर और 4 एंटीरियर हो गए, ठीक है। और एक और बात है कि ये जो आपकी सुपरफिशियल वाली होती है मीडियन के साथ भी मिलती है, तो मीडियन वाला हम एस्पेक्ट यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि वो एंटीरियर मीडियल, ये अबैक्सियल है, एंटीरियर मीडियल अबैक्सियल प्रॉपर डिजिटल नर्व के साथ मिलेगा, ठीक है। आप मीडियल लगा सकते हो। ये दोनों बना रहे हैं एक्सियल और अबैक्सियल प्रॉपर डिजिटल नर्व्स, ठीक है। ये एक्सियल है, अबैक्सियल है, और ये कौन सा है, एक्सियल। तो ऐसे आपको इसको याद करना है। और क्या याद करना है, जो रेडियल है वो आपके सारे के सारे एक्सटेंसर्स प्लस अल्नैरिस लेटरालिस को सप्लाई करती है, जबकि जो मीडियन और अल्नर है ये मिलके आपके फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये अल्नर और रेडियल मिलके आपके एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती हैं। सो दिस इज द full flow chart and the diagram we made. So you can revise from here also that median, palmar, ulnar, it divided into posterior and palmar, and another dorsal one will be continuing as the anterior part. Clear? Thank you and have a nice day. Oh, sorry. We forgot to study the numbers, how you should remember the numbers. So your supra scapular, your subscapular both arises from C6 and C7, जो याद रहे बस वो लिख दो। your axillary and your long thoracic, ये एक ही पाथ से निकलते हैं ऑलमोस्ट, ये दोनों C7 C8। your thoracodorsal C8 T1, कॉन्टिन्यूशन में याद दो 6 7 7 8 T1 ऐसे। तो 5 तो हो गई ना। फर्स्ट फिर आती है एक्सटर्नल थोरेसिक, C8 T1 तो है ही है, T2 जोड़ दो। अब नर्व टू पेक्टोरल है जो, वो याद कर लो C7 C8 T1। सो बस यही 6-7 नंबर है हमको याद करने हैं, बाकी इसी के नंबर आपको याद नहीं करने हैं क्योंकि वो आगे आगे कंटिन्यू रहती हैं। तो दोनों S हैं जो वो C6 C7 हैं, ला 7 8 है, thoracodorsal is C8 and T1, external thoracic is C8 T1 and T2, and your C7 C8 and T1, इन तीनों को मिला दो क्या बनती है, पेक्टोरल,
ठीक है, तो आप इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन. ठीक है, and if there is any doubt you can message in the inbox. Thank you and have a nice day.